Types of leaves. Types of leaves. On the basis of shape, size, their arrangement on the stem, leaves of flowering and non-flowering plant, and various other attributes, leaves can be divided. But most important type of classification is on the basis of incision. We can classify it on the basis of incision leaves into two parts: simple leaves and compound leaves. Compound leaves. What is simple leaf? Simple leaf. This is rough sketch of simple leaf. A simple leaf is said to be simple when its lamina is entire. When its lamina is entire or incised. First, its lamina is entire, and second type is leaf that is normal leaf. Simple entire lamina. And next is lamina is not entire. It is incised to any depth, greater or less, but not up to the midrib. ये तो इंटायर लेमिना है, सिंपल हुआ। ये भी सिंपल है, इसलिए सिंपल है कि ये अंदर तक ये कटी हुई है लीव्स, मगर ये मिड रिब तक नहीं जाती है। ये थोड़ी कटी है, ज़्यादा कटी है, लेकिन इंटायर लेमिना फिर भी इंटायर है। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ सिंपल लीफ। एग्जाम्पल इसमें लिखें गुआवा। एग्जाम्पल इज गुआवा लीव्स, mango leaves, next is various types of oaks. ये भी एग्जाम्पल है, various types of oaks. Next is compound leaf. A leaf in which leaf blade is incised up to the midrib or petiole, thus dividing it into several small parts, that is leaflet. इसमें लीफ जो होती है, लीफ कटी हुई होती है, वो मिडरिब तक पहुंच जाती है। जैसे कि एक सिंपल इसका एग्जाम्पल ले लें। सिंपल लीफ में क्या होता है, ऐसी समझने के लिए इस तरह से रहता है, ये बीच में मिडरिब रहती है। इसमें जो नेक्स्ट लैमिना एक्सिस है वो अंदर कट जाएगा, डिफरेंट लीफलेट बना देगा, डिफरेंट लीफलेट। ये लीफ अलग अलग लीफलेट बना देंगी, दैट इज नोन एज, दीज आर लीफलेट्स। और ये मिडरिब जो सिंपल लीफ रहती है तो मिडरिब कहलाता है, और यहाँ पे रैचिस हो जाएगा। कंपाउंड लीफ में नाम से बदलेगा, दैट इज rachis. So, a compound leaf is a leaf made up of two or more leaflets. Compound leaf is a leaf made up of two or more leaflets. In a compound leaf, the midrib of the leaf is branched into different leaflets and it is connected by a single petiole. The compound leaf, we can divide compound leaf into two types. Compound leaves into two types: pinnate compound leaf and pinnate compound leaf and palmately compound leaf. Compound leaf. Pinnate compound leaf
is a simple uniconstate leaf. Simple unicostate leaf undergoing incision. Simple unicostate का क्या मतलब? Unicostate means this leaves which has one midrib, one main venation is known as unicostate. Leaf which have one main midrib, that is unicostate. इसमें क्या होता है पिन्नेट लीफ में? इसके अंदर लीफलेट है, ये डिवाइड करेगी. ओरिजिनल इस टाइप का शेप था. ये जो लीफलेट डिवाइड कर रही है, दैट इज यूनिकॉस्टेट लीफ. यूनिकॉस्टेट टाइप ऑफ इंसिजन, दैट इज पिन्नेट कंपाउंड लीफ. Type of pinnate compound leaf. Number 1 is unipinnate. The leaf with leaflets on each side of the axis. Main axis के दोनों साइड में leaflet रहेगा. That is unipinnate. दोनों साइड के axis है. Example is cassia. Next is bipinnate. Leaves are attached with rachis. This is rachis. Both sides of midrib leaves are arranged. Example is cassia. That is unipinnate. Next one is bipinnate. Secondary axis bipinnate. This is bipinnate. Secondary axis bears leaves. Bear leaves. This is bipinnate. इसमें सेम एक्सिस पे था, इसमें सेकेंडरी एक्सिस पे है. एग्जाम्पल इज अकासिया. Secondary axis bearing the leaflet is produced by the central axis. Secondary axis is produced by the central axis. Next is tripinnate. Main axis, rachis, and then leaves. Example is moringa. In this, a tertiary axis bearing leaflets emerges from the secondary axis. Tertiary axis bearing the leaflets emerging from the secondary axis. Primary axis, this is central axis. Then secondary axis, this is tertiary axis. Fourth one is decompound. Leaf with more than 3 pinnate. More than 3 pinnate. 3 pinnate से ज़्यादा है इसमें. That is decompound leaves. इससे लीफ निकलेंगी. कोरिएंडर, ये धनिया की पत्ती देखा होगा तुम लोगों ने, वो होती है. एग्जाम्पल इज ऑफ decompound is coriander.
type is peripinnate. Peripinnate. In this, leaves without a terminal leaflet. Leaf without a terminal leaflet. Example: cassia, नीम. इसमें क्या होता है? लीफ 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 स्टेप से लीफ. इसमें कोई टर्मिनल लीफ नहीं होती है. लीफ विदाउट ए टर्मिनल लीफलेट. तो इसमें इवन नंबर ऑफ लीव्स रहेंगी, बराबर इवन नंबर ऑफ लीव्स हैं. वन सेट ऑफ लीफ है, इवन नंबर ऑफ लीफ. दैट इज peripinnate आर लीव्स विदाउट ए टर्मिनल लीफलेट. नेक्स्ट इज imperipinnate. Imperipinnate. Leaf with an odd terminal leaflet. These type is leaf with an odd terminal leaflet. इसमें अभी आपने देखा जस्ट उसका उल्टा है. इसमें लीफ 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 and one terminal leaf is there. Leaf with an odd terminal leaflet. Example is pea. इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ लीफ ऑड रहेंगी. वन अनपेयर्ड लीफ है, दैट मीन्स नंबर ऑफ लीफ इज ऑड. नंबर ऑफ लीफ इज ऑड. वन अनपेयर्ड लीफ इज देयर. Next come to the palmatory compound leaf. Palmatory compound leaf. Compound leaf. In palmatory compound leaf, leaflets are attached at the tip of the petiole. Leaflets are attached at the tip of the petiole. The petiole. Leaf is multicostate, divergent leaf. This type of leaf is multicostate, divergent leaf. Multicostate divergent leaf. क्या होता है लीफ? पेट्यूल, टिप ऑफ पेट्यूल. दिस इज ये करेंगे उसके इससे ये निकला ये लीफ में क्या होता है? ये this attachment is known as petiole. ये सारे मिड्रिब हैं, वेन्स हैं. मल्टीकॉस्टेट है. मल्टीकॉस्टेट मीन्स वेन मोर देन वन मिड्रिब. इसमें इंसिजन हुआ. आम हालत में ये ऐसे रहता, गोल रहता, मगर इंसिजन हो करके ये सारे अलग अलग लीफलेट बन गए. ये इस तरह से एक बार देखो. ये सारे वेन्स हैं. अटैच रहती आम तरह से लीफ अगर सिंपल रहती. लेकिन इसमें ये सारे अलग अलग लीफलेट बन गए. ये लीफलेट बने हैं. मल्टीकॉस्टेट डाइवर्जेंट लीव्स हैं. ये मल्टीकॉस्टेट है, मतलब वेन मोर देन वन वेन इज नोन एज मल्टीकॉस्टेट. एग्जाम्पल इज सिल्क कॉटन. Palmatory leaves can be differentiated into many types. One is unifoliate.
Unifoliate. Unifoliate leaves have only one leaflet. Leaves have only one leaflet. तो एग्जाम्पल साइट्रस फ्रूट, वन लीफलेट है तो फिर ये डिफरेंट वन, ये इसके एग्जाम्पल क्वेश्चन अराइजेस कि वन लीफलेट है तो फिर ये सिंपल लीफ काहे नहीं है, ये कंपाउंड क्यों है? तो unifoliate compound leaf can be differentiated from simple leaf in having joint or winged petiole. Winged petiole, इनका petiole से ये join किया हुआ है, ये swollen petiole है, winged petiole है, ये so it is called unifoliate compound leaf. वन है इसका leaflet, लेकिन ये मिला हुआ है winged petiole से. Next is bifoliate. As the name indicated, these leaves have two leaflets. These leaves have two leaflets. Two leaflets. That is bifoliate. It has two leaflets. Example is balanites. Third is trifoliate. These leaves have three leaflets. These leaves have three leaflets emerging from the same point. Emerging from the leaflet, emerging from the same point. These have three leaflets emerging from the same point. Example is oxalis. Fourth one is quadrifoliate. These leaves have four leaflets arising from the same point. Four leaflets arising from the same point. Example is Marsilia. Example is Marsilia. And the next is multifoliate. These type of leaves has many leaflets arising at a common point. Common point is petiole. Example is Bombax. Many leaflet arising from a common point. This is multifoliate.